Dear students, good afternoon. So as we have completed the first volume of ncert textbook, up to the maxima and minima we have completed, and now we are going to start the second volume. And the first topic of the second volume is the part of a calculus, and which is called the integral calculus. We are going to start now today, that is called integral calculus. And in an integral calculus there are two parts. One is called definite integral and another is called indefinite integral. So all of you go through already in physics little idea about integration, what actually integration is. Integration with definite limit is representing the area of a curve under the curve, and indefinite integral, which is not representing the area, it is the actually representing some family of curves. Integration of some particular function representing a family of curves. Okay, so before going to start one particular thing, I am to tagline. You got it? That's tagline is, that is, integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. That means if suppose differentiation go in this direction, then integration go its opposite. Okay, integration go its opposite. So before going to start the topic, let us define what actually indefinite integral is. So first we discuss about definition and related formulas in this particular topic, and there are different type of formula, three types of that is formulas are there. First we discuss about fundamental formulas, and then we go further with a few more that is formulas. Okay, first what actually is, if the differential coefficient means if suppose y is a function of x, then dy by dx or f dash x, this is called differential coefficient. So if the differential coefficient of fx, suppose fx is a function, uska differential coefficient is suppose another function, it is called what, small fx. That is, the statement is written in this is okay, this is called ddx of fx. This is called differential coefficient of capital Fx, which is exactly equal to what, fx. If we get ddx of something is equal to some function, then what happens, then we can say that antiderivative means derivative का उल्टा, reverse, the antiderivative of fx, उसका जो antiderivative, fx का antiderivative का नाम है integration. So antiderivative of fx is capital Fx and written as in this symbol. This is called antiderivative of fx with respect to what, x. Antiderivative of fx with respect to x is equal to what, fx. How we will get, if we know the derivative of fx with respect to x, अगर उसका derivative हमें differentiation पता है, वो function का अगर differentiation पता है, तो उसका antiderivative जो होगा उसका नाम है integration, and this particular integration name is indefinite. Why it is indefinite, I will explain. So first, you know, if we know a function capital Fx and small fx such that if the derivative of capital Fx is equal to small fx, then integration of small fx is equal to what, capital Fx, and integration of small fx with respect to x is called antiderivative. It is called what, antiderivative, mean reverse. अगर उसको डेरिवेटिव करेंगे तो वो मिलेगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर उधर मिलेगा, रिवर्स हो जाएगी. दैट्स वाई कॉल that is integration is the reverse process of differentiation. Now we are going to give an example and explain you. Okay, and this particular process of integration, ये जो process होता है उसके बाद एक result मिलता है, this process is called integration. Process का नाम क्या है, integration. And this particular जिसको हम integration करते हैं, integrate करते हैं, उसका नाम है integrand. इसका नाम क्या है, इंटीग्रैंड. ये फंक्शन का नाम क्या है जिसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, उसका नाम है इंटीग्रैंड. प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन, एंड
ये जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो होती है उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स. Okay, so what we understand in this particular definition, if suppose capital Fx and small fx are two functions such that if the derivative of capital Fx is equal to what, small fx, then integration antiderivative of small fx is what, capital Fx, and this antiderivative is nothing but called integration of small fx. The result is equal to what, capital Fx. You know, in differentiation, the derivative of a constant is always 0. Remember this will be required in this particular concept. Okay, so this is the definition, basic definition of the indefinite integral. Now why it is indefinite, we are going to explain with the example. Suppose that we consider some particular function. Suppose that y equal to x square, a function. If you take the derivative of y, or if you take derivative of x square, ddx of what, x square, derivative of x square is equal to what, twice x. Okay, x square is a function, twice x is another function. Okay, and differential coefficient of x square means ddx of x square exists, it is what, twice x. So by the formula, by our definition of integration, antiderivative, what is the antiderivative of this? Antiderivative denoted by this symbol, antiderivative of twice x, dx means with respect to x, is equal to what, x square. By definition, if ddx of x square is equal to twice x, then integration of twice x dx is equal to x. From here what we understand, if you can find the integration of a function, if we get the derivative of a particular function which is equal to this, उसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा जब उसका डेरिवेटिव ए फंक्शन मिलेगा जिसका डेरिवेटिव करने के बाद ये मिलेगा. अंडरस्टूड. सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन मस्ट हैव ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए. ठीक है. सो ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल दिस. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट यू सी, ऐसे लिखने से अच्छा होगा, इफ यू लाइक दैट, implies integration twice x dx equal to x square. Okay, again you see ddx of x square plus 1, तो x square का डेरिवेटिव क्या है, twice x, and ddx of 1 constant is 0. So again you write integration twice x dx equal to what, x square plus 1. If you take ddx of what, x square plus 2, then you will get again derivative is what, twice x, which implies integration twice x dx equal to what, x square plus 2. In this way you go ahead, suppose you can take ddx of suppose x square minus 1, उसका डेरिवेटिव फिर ट्वाइस एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स डी एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो सेम द इंटीग्रेंट ऑफ और एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स, all are different. All are what, we are getting different curve, x square representing a parabola, x square plus 1 also representing a parabola, but a different curve with different vertex. X square plus 2 also represent a parabola, x square minus 1 is also representing a parabola. You know basically ddx of x square, suppose I am going to, so ddx of x square, okay, it means the slope of the tangent to the parabola. पैराबोला की कोई एक पॉइंट में उसका स्लोप मीन करता है, जिससे एक्चुअल व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज दैट ddx of x square means it representing the slope of the tangent at any point. Okay, and if the point is fixed, we will get a fixed slope. Okay, and if the point is not fixed, arbitrary, then it representing any point. जैसे
हम अगर यहाँ में एक टेंजेंट ले लें, दिस इज़ योर सी ए वाई, वहाँ में एक टेंजेंट ले लें. If I take a tangent here, or if I take a tangent here, if I take a tangent here, if I take a tangent here, so everywhere what happen, ddx of x square जो है उसका मतलब ये है वो सारी टेंजेंट का स्लॉप, सारी टेंजेंट का स्लॉप क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके So from here you see, if I go on, then ddx of x square plus c, suppose c is a constant which is an arbitrary constant. It may be -1, it may be 2, it may be 1, it may be 0, it may be anything, x square plus c. So उसका derivative भी twice x होगा, because derivative of c is equal to what, 0, implies anti-derivative क्या होगा, twice x dx का. So anti-derivative of twice x dx will be x square plus c. Okay, finally what we get, integration of twice x is not fixed, it is an arbitrary, it is different. There is many for different value of c, twice x dx will be different, twice x dx will be different. That means ये जो इंटीग्रेशन होती है उसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं है. फॉर डिफरेंट सी इट इज़ डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंडिफाइनाइट. इट इज़ एन इंटीग्रेशन, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन, बट व्हाई इट इज़ इंडिफाइनाइट, बिकॉज ऑफ दिस c is an arbitrary constant. And I already in the definition told you, integration of a function, ultimately whatever be the result we get, this result representing a family of curves. Family of curves means what? It is a parabola, it is a parabola, it is a parabola, everything is a parabola. And if you include all the parabola in a particular set collection, then it is called family. So here you see, this are the different type of parabolas. जब ओरिजिन में उसका वर्टेक्स 0 0 है उसका है, ठीक है. जब उसके साथ 1 ऐड हो गया तो शिफ्ट हो गया वर्टेक्स ऊपर जाएगी, 2 ऐड होगा शिफ्ट हो गया वर्टेक्स ऊपर जाएगी, शेप विल बी सेम. एंड इफ x इज इक्वल टू -1 तो नीचे आएगी, तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, -1 x. दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू, इफ़ यू पुट -1 देन y इक्वल टू 0, तो वर्टेक्स -1 0 होगा y एक्स में, ठीक है. 0 1 होगा वर्टेक्स, ओके, ऑन y एक्सिस इट इज़ व्हाट 0 1, इट इज़ 0 0 1, इट इज़ 0 2, इट इज़ 0 -1, वट एवर बी. ओके, तो फाइनली what you are getting that is this integration of a particular function representing a family of curves. Now I am going to discuss about what is the geometrical interpretation. Likewise in derivative में क्या था, dy by dx, it means ddx of any function y, dy by dx representing the slope of the tangent. Now integration of a function is integration of a function. What is actually its mean? What is its mean? ये क्या चीज़ है उसको समझना ज़रूरी है. समझ में आ रहा है? If I draw a line, vertical line parallel to y axis, this is the line, and suppose the equation of the line is x equal to, suppose a, लाइक x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. अगर राइट में जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में आएगा तो ये नेगेटिव होगा. तो सम x इज इक्वल टू सम रियल नंबर, ओके, सम रियल नंबर. नाउ सी एट दिस पॉइंट, शेप थोड़ा सा शेप ऐसा होगा. इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करें, 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 ऐसा. अंडरस्टूड? सो ये टेंजेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है ddx ऑफ ये मतलब है ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a. सो इसका क्या वैल्यू होगा, ये ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, तो x इज इक्वल टू ए, फाइनली क्या हो रहा है, ट्वाइस ए हो रहा है कि नहीं. सो एवरी पॉइंट में स्लोप क्या हो रहा है, देखो ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये पास सारे टेंजेंट क्या है, पैरेलल है.
सो पैरेलल लाइन हैव ए सेम स्लोप, तो उसमें भी स्लोप क्या है, ट्वाइस से होगा, उसमें भी स्लोप ट्वाइस से होगा, उसमें भी स्लोप ट्वाइस से होगा, उसमें भी स्लोप ट्वाइस से होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस c. Finally we will write the answer, this is the final answer. Okay, so integration twice x dx is equal to what, x square plus some constant. ये constant may be 0, may be 1, may be -1, may be -2. Clear? Okay, so finally what we can conclude, that if you know the derivative of a function, its reverse antiderivative is called the integration of that particular function. Okay, so finally what we get, if ddx of fx equal to small fx, then integration of fx dx is equal to what, कैपिटल fx प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है, ddx ऑफ fx का भी वैल्यू fx होगा, और ddx ऑफ उसका अगर डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ddx ऑफ fx इक्वल टू व्हाट, स्मॉल fx, तो उसका डेरिवेटिव, उसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ddx ऑफ व्हाट, fx प्लस c, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यू सी ddx ऑफ व्हाट, fx प्लस ddx ऑफ व्हाट, c। तो फाइनली ddx ऑफ fx क्या है, स्मॉल fx, एंड इसका डेरिवेटिव 0 है, तो फाइनली क्या होगा, fx होगा कि नहीं। सो फाइनली व्हाट वी गेट, ddx ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट, स्मॉल fx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन। क्लियर, इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू व्हाट, fx प्लस c, capital Fx plus c. So this is called, integration is the reverse process of differentiation. It is called antiderivative. Now we know standard derivative काफ़ी हम लोगों ने किया है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, तो वहाँ से हम क्या आगे करेंगे, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फंडामेंटल जो फार्मूला होती है उसको निकालेंगे। फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, यू नो नीड टू मेमोराइज। इफ़ यू नो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, then you definitely find its integration, you definitely find the antiderivative. Okay, so ये फिगर का ज़रूरत नहीं। So main important thing is that if you know derivative of a function, then definitely you can find the antiderivative of the function after derivative the particular function. Okay, so differentiation is important. For example, some example I am given to you. Suppose that ddx of x to the power n, हम लोगों को पता है ये रिजल्ट क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसका इंटीग्रल क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर n होगा। ठीक है, n तो बाहर है, याद रखो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाती है, तो इंटीग्रेशन में अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो भी बाहर आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और फाइनली यू कैन राइट दैट इज इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n minus 1 dx equal to what, x to the power n by n, and which can be written as x to the power n plus 1 minus, ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। Now from here you can see
if I do like that, ddx of x to the power, suppose I am increasing the power by 1 n plus 1, what will be the result? सेम वे n प्लस 1 इधर आ जाएगी, तो पावर एक क्या होगा, कम होगा, n प्लस 1 माइनस 1, अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज वी नो द डिफरेंशिएशन. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन ले लें, तो n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, उसका इंटीग्रेशन dx, ये सिंबल है, इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर n प्लस 1, और n प्लस 1 तो क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा और फिर इधर चले जाएगी, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx रहेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई व्हाट, n प्लस 1. समझ में आ रहा है. तो फाइनली व्हाट हैपन, एंड उसके साथ क्या होगा, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगी. सो फाइनली व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n dx, ए फॉर्मूला वी कैन डेवलप, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n. क्या होता है, कैसे फॉर्मूला आता है, ये जो पावर क्या होता है ऊपर में इंक्रीज होता है और नीचे में भी क्या होता है, ये n प्लस 1 डिवाइड हो जाती है. इट विल बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन n इज इक्वल टू व्हाट, n नॉट इक्वल टू व्हाट, -1. अगर n का वैल्यू -1 हो जाए तो ये नीचे 0 हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली दिस पार्टिकुलर फिगर विल बी व्हाट, अनडिफाइंड हो जाएगी. दैट मीन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और ओनली n नॉट इक्वल टू -1. -1 छोड़ के जितना रियल नंबर होगा सबके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है. ठीक है. सो वन फार्मूला वी डिड्यूस, दिस इज वन फार्मूला. ओके, this is a particular formula. Integration x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. How you can apply this particular formula in problems? Suppose आपको कह दिया है कि you have to find what, integration x dx, तो उसको अप्लाई करेंगे. उसमें n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यूज़ करो फार्मूला में क्या होता है, पावर के साथ 1 प्लस 1 मैंने 2 होगा, 1 प्लस 1 नीचे भी 2 होगा, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2. Okay, if suppose it is suppose x to the power -3, suppose x to the power -3, तो क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से n का वैल्यू -3 है, तो इसमें -3 प्लस 1 डिवाइड बाई व्हाट, -3 प्लस 1. तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, x to the power -2 बाई -2 प्लस c, होगा कि नहीं. तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. दिस इज वन फर्स्ट fundamental formula for integration. Okay, और सारी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज व्हाट, आई एम जस्ट सीरियली आई हैव गोइंग टू राइट. नंबर 1, इंटीग्रेशन x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n not equal to what, -1, n not equal to what, -1. Now when n equal to 1, what happen, if n equal to what, -1, तो आपका फंक्शन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन x to the power -1 dx, और फाइनली ये क्या हो रहा है, 1 by x dx, 1 by x dx. Okay, but how to find the integration 1 by x? You know a very interesting formula, ddx of log x equal to what, ddx of log x is equal to what, 1 by x. तो ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 by x. So by the basic definition of integration, you can write the integral of 1 by x dx equal to what, log x. ठीक है, इंटीग्रेशन 1 by x dx इज इक्वल टू व्हाट, log x. उसमें हम log x नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला में मॉडुलस लिखेंगे. मॉडुलस लिखने का ज़रूरत यही है कि log इज़ डिफाइंड व्हेन द क्वांटिटी इनसाइड log इज़ व्हाट, मस्ट बी पॉजिटिव. तो उसको ये जो x होती है, ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव पता नहीं, तो log अनडिफाइंड हो जाएगी. इसीलिए उसको मॉडुलस लगाने से क्या होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 0. ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाएगी तो 1/0 होगा, तो इट इज़ नॉट 0, आइदर इट इज़ लेस देन 0 और इट इज़ ग्रेटर देन 0. And if it is less than 0, then log is undefined, so it must be greater than 0. That's why I am putting modulus. So this is the formula. So finally what is the, for n is equal to -1, 1 by x dx is equal to what, log modulus of x. Clear? This is the second formula. So this is one, and this is suppose you can write like that,
integration number 2, integration 1 by x dx equal to log modulus x. So remember that why I am giving modulus to define log, to define the log, otherwise log may be undefined. Log may be what? Undefined. Another interesting thing is that you see ddx of sin x equal to cos x. You know it? Understood? तो वहाँ से क्या होगा, उसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x dx क्या हो जाएगी, sin x, और साथ क्या होगा, c ऐड होगा. तो यू कैन राइट अनदर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c. सो वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट इन डिफरेंशिएशन cos x के डिफरेंशिएशन में क्या होता है, माइनस आती है, तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, प्लस आती है. तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों को. डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स. सो अनदर फॉर्मूला इज सपोज डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन एक्स. ओके, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगी. रिवर्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस फिर इधर आ जाएगी, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स. इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स. ओके, सिमिलरली सपोज दिस नंबर 5, you know that ddx of tan x. What is ddx of tan x? You everybody know ddx of tan x is equal to what, sec square x. ओके, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, उसका इंटीग्रल tan x होगा. तो ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन sec square x dx इक्वल टू व्हाट, tan x. ओके, सिमिलरली यू कैन राइट integration what, cot square x, I am sorry, cosec square x. Cosec square dx is equal to what, minus cot x plus c. Okay, these are the list of formulas you can develop. Here I am not memorizing anything, I am just applying what, differentiation, and from here by the definition of integral I am evaluating the standard what, standard integral. Okay, so you also know few chapter like ddx of what, sec x equal to what, sec x into what, tan x. तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगी, sec x हो जाएगी. So you can write the list of formulas like that. Integration number 6, 7, integration what, sec x into tan x into dx equal to what, sec x. सबके साथ सी एड होगा, सबके साथ सी एड होगा. सिमिलरली यू नो डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. तो इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस कोसेक एक्स होगा. ये माइनस उधर चले जाएगी. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला. सपोज I am going to explain. You know that ddx of a to the power x, in differentiation we already ddx of a to the power x, what is the formula, a to the power x into log a by c. ओके, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल व्हाट, a to the power x into log a by c into dx इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एंटी डेरिवेटिव रूल, इट इज़ ए टू द पावर एक्स. क्लियर. आप कहेंगे उधर क्यों नहीं सी नहीं दिया, सी दे सकते हो, सी देने के बाद फिर उधर ये जाएगा, फिर अगर करेंगे क्यों होगा, मैं समझा रहा हूँ. सो इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स, ये जो कांस्टेंट है log a बेस e इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या होगा, इंटीग्रल की बाहर आ जाएगी, फिर नीचे जाएगा. सो ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए टू द पावर एक्स बाई log a by c plus c. Okay, finally we will get a constant c. ठीक है, so this is another formula, you can consider it is at 9. This formula is considered as number 9. Okay,
number 9. Like if suppose that a equal to e. What is e? E is a particular value of a. What is a? A is any real number, but a is what? Any real number. It may be positive real number or it may be negative real number. Okay, it can be anything. But when a equal to e, then e lies between what? 2 and 3. This is a particular real number. This is a particular real number lying between 2 and 3. इसका वैल्यू 2 point something होता है. ठीक है. तो when we put suppose a के जगह में हम e पुट करेंगे तो क्या होगा? तो उस राइट साइड में क्या होगा? e to the power x होगा. ये क्या होगा? log e base e हो जाएगी प्लस c होगा. एंड यू नो log e base e इज इक्वल टू व्हाट? उसका वैल्यू क्या है? इस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 1. तो फाइनली आंसर क्या होगा? फाइनली आंसर होगा दिस इज e to the power x plus c. Okay, this is another number 10. This is number 10. Integration e to the power x dx is equal to e to the power x. Very very interesting thing is that this you know ddx of what? This is a particular function, exponential function. ddx of e to the power x is equal to what? E to the power x, and integration e to the power x. Integration e to the power x dx is equal to what? Again e to the power x. So this is a particular function whose differentiation and integration are same. Integration are what? Same. Okay. Now number 10, 11. You know ddx of sin inverse x equal to what? 1 by root over 1 minus x square. ठीक है कि नहीं? This formula you got in the first in differentiation. ddx of sin inverse is equal to 1 by root over 1 minus x square. So इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 by equal to what? Sin inverse x plus c. Okay. Also you know ddx of what? Tan inverse x. Tan inverse x is equal to what? 1 by 1 plus x square. Okay, you got this particular formula. So what is the integration of this? उसका integration क्या होगा? ये होगा. So integration of what? 1 by 1 plus x square dx equal to what? Tan inverse x plus c. Okay. Number 13, you get integration of that is ddx of sec inverse x. ddx of sec inverse x is equal to what? 1 by x into x square minus 1. ये तो आप लोगों को पता है. तो what is integration? Integration of 1 by x into x square minus 1 dx equal to what? Sec inverse x plus c. ठीक है. So in this way you can get, these are these few standard integral. You have this what? Few standard integral, and in this few standard integral what you see, only this particular, this one and this one, there is a denominator. There is a what? Denominator. Otherwise in all the standard integral there is no denominator. There is no denominator. Okay, denominator नहीं है. So you remember all this particular standard integral. If you go through this integral, write in your notebook, practice well. Don't go memorize it. Just go that do you know the derivative of a particular function? जिसका derivative मिलता है उसको derivative को फिर इंटीग्रल करोगे रिजल्ट को तो ये particular function मिल जाएगी. Okay, you will get easily that particular function. Okay. So one particular small concept I will discuss and finally I will end up. So this is a theorem, and it is also considered as a formula. The theorem is if integration fx dx is equal to capital Fx, ये होता है, then what happened? Integration f of ax plus minus b into dx equal to 1 by a
into f of ax plus minus b. This is a very, very interesting formula. See how we can apply this. Suppose we consider a formula, a question. You have to find, suppose उसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है. your original standard integral is what? x to the power n. फॉर्मूला क्या था? x to the power n plus 1 by n plus 1, ठीक है. तो उसको मैं क्या करूँगा, ये x जो है उसके साथ कंपेयर कर लूँगा. समझ में आ रहा है? Here you see your original function is what? इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल व्हाट? कैपिटल fx, ठीक है. ये किस टाइप का इंटीग्रल है? जैसे इंटीग्रल की x को पकड़ ले तो ये एक्स स्क्वायर dx, उसका इंटीग्रल क्या होगा? बाय आवर फार्मूला एक्स क्यूब 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई व्हाट? 3 होगा. अंडरस्टूड? ये दिया हुआ है. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx वी नो, स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट? एक्स क्यूब बाई 3. अभी फंक्शन के अंदर क्या है? x के जगह में क्या लिख दिया? 2x + 3 ax + b टाइप लिख दिया, लीनियर टाइप. x + b इज़ व्हाट? ए लीनियर टर्म. तो आपकी x की जगह में एक लीनियर टर्म आ गया. तो उसका इंटीग्रल इस हिसाब से क्या होगा? पहले क्या होगा? जो हमारा फार्मूला था x³ / 3 ऐसा होगा, 2x + 3³ डिवाइड बाई 3, ये होगा कि नहीं? बट फार्मूला में देखो x का जो कोफिशिएंट a होती है, ये क्या हो रहा है? जाके क्या हो रहा है? 1/a हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एज एन 1/a. तो इसमें x में कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी. फाइनली आंसर क्या होगा? 6 2x + 3³. और एक रिजल्ट ले ले तो उसमें और आप लोगों को समझ में आएगी. Dear students, in continuation of the last problem, I am going to use this particular theorem to solve such particular problem. Today's problem is what? There is a integration sine, we have to evaluate sine 3x minus 5 dx. You know there is a standard integral. This standard integral is sine integration sine x dx equal to what? Cos x. So integration sin x dx is equal to what? Cos x. Okay, minus cos x. Integration sin x dx is equal to what? Minus cos x. Now this x, you see here x is replaced by what? 3x minus 5. And in your theorem it is given integration fx dx. If the integration of fx dx is equal to what? Capital Fx, then integration of x is replaced by a linear term ax plus b equal to f of ax plus b, but only one thing is that coefficient of x a will be multiplied by 1/a, will be multiplied by 1/a. So here this can be considered, this particular can be considered that fx, and this result is what? Capital Fx. Okay, now if x is replaced by ax plus b, this means this x is replaced by x plus b means what? 3x minus 5. Okay, here I am taking minus sign, ax minus b. Okay, so we can use this formula and solve the integral. Okay, this is the standard integral. Integration sin x is equal to what? Minus cos x. So what is the solution? Solution is very easy. Integration sin 3x minus 5 dx, which can be written as per formula. Sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos होता है. cos x, x means what? 3x minus 5. But since the coefficient of x is equal to what? 3, so it will be multiplied by 1/3, applying this particular result. So into 1/3 plus c. So finally it can be minus 1/3 cos 3x minus 5 plus c. Okay, this is the result. So this is the actual application of this particular integral. So also we have discussed about there is a few standard integral, few standard what? Integral.
and using this integral today we are going to solve more problems related to this particular topic. Okay, so suppose that we consider few questions and we try to solve. The first question is, suppose you are to find integration, suppose sin square x dx. Since we got only the formulas related sin x, sin cos x, sin mx types. Okay, before going to start this particular problem, let us discuss a few things like that. Suppose that you know that ddx of sin mx क्या होती है, बाय चेन रूल इसका रिजल्ट क्या होती है, m इंटू cos mx. Okay, m into what, cos mx. First derivative of sin mx is equal to cos mx, again derivative of mx is equal to what, m. So what is the integral of this? Therefore integral of m into cos mx, उसका इंटीग्रल लेंगे तो m बाहर आ जाएगी, इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, sin mx. एंड इफ m गोज इन द राइट हैंड साइड, शिफ्ट किया जाए तो क्या होगा, cos mx dx is equal to sin mx by m plus c. So here very interesting is that you know ddx of cos mx is equal to what, am into minus m into sin mx. You know that ddx of cos mx equal to minus m into sin mx. Okay, this is the डेराइवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. बट इंटीग्रेशन में क्या होती है, डेराइवेशन में क्या होती है, डेराइवेटिव में द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एम इज व्हाट, मल्टीप्लाइड व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय विद द फंक्शन. ओके, sin mx. And in integration what happen, this m is divide. So this is the distinction, because division is the reverse process of what, reverse process of what, multiplication. Or here m is multiplied, here m is what, divide, coefficients. So ultimately what we get the integral of sin x, integral of sin mx type, or integral of cos mx, integral of cos x. That means we get the linear term. There is no integration of quadratic terms like integration of sin square x, integration of sin square 2x, integration of cos square x, integration of tan square x. So we have to convert it into standard derivative integral and then perform the integral. Okay, so what is our question? And the question is, you are to find the integral of sin square x. We are doing basic integral. It will be applicable into solving the that is difficult problems. So integration sin square x dx. We do not know the integration of sin square x, but we can convert into standard integral and can perform. You know a particular result in trigonometry, 1 minus cos 2x is equal to what, 2 sin square x. And from here you can write sin square x equal to half into 1 minus cos 2x. Okay, you got the result, right? So you can replace, now see this is a quadratic term, this is a linear term. Ultimately we can write this half into, half बाहर रहेगा, 1 minus cos 2x dx. Now you know integral can be separated, like it is differentiation of a particular function, sum of two function can be separated, or difference of two function can be separated. Likewise the integral also can be separated. So it can be written as half into integration dx, 1 into dx, okay, minus half into integration cos 2x dx. And integration dx क्या होती है, integration dx is equal to what, x. So integration dx is what, x by 2 result होगा, why x I will explain. And integration cos 2x, integration cos x क्या होती है, sin x होती है, तो cos 2x क्या होगा, sin 2x. बट वो जो कोएफिशिएंट है 2 वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी.
ये actually this is the application of this. Okay, here b equal to what 0, ax type, x is equal to what 2x, right? तो उसमें कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, a 1/a हो रहा है. समझ में आ रहा है? पहले क्या होगा, ये सपोज दिस इज x, तो cos sin 2x sin x हो गया, sin x मीन sin 2x हो गया, और फिक्स x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड हो गया. समझ में आ रहा है? सो एक्चुअली दिस इज द थ्योरम, वो थ्योरम से ये सारी चीज़ हो रहा है. अंडरस्टूड? वाई इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू व्हाट, integration dx is, this is the answer. Finally you can take half common, it will be x minus sin 2x को तो expand कर सकते हो या इसे लिख दो हाफ इंटू sin 2x, सो प्लस c. फाइनली इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद c ऐड करना, जहाँ पे इंटीग्रेशन सब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ में c शुरू होगा. ठीक है, तो वाई इट इज़ x इंटीग्रेशन dx, you see it is very interesting. Here I am doing इंटीग्रेशन dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. 1 को आप लिख सकते हो x टू दी पावर 0 dx, लिख सकते हो कि नहीं? और x टू दी पावर 0 को क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 एज द फॉर्मूला x टू दी पावर n dx. और फाइनली ये क्या होगा, x टू दी पावर 0 प्लस 1 मीन्स x, एंड ये नीचे 1 होगा, और फाइनली क्या हो रहा है, ये x हो रहा है. सो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू व्हाट, x. क्लियर एवरीबॉडी? बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल. कौन सा इंटीग्रल यूज़ किया, दिस इज इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx. ओके, नाउ दिस इज द रिजल्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स such that your conception, clarity and application of standard integral, how you can utilize the formula in the problem you learn. Okay, so using and solving the problems. Like suppose, evaluate next question. You see, you are to find integration of suppose cos square x. How to find this integral? Integration of cos square x, you know, 1 plus cos 2x is equal to what, 2 cos square x. So वहाँ से क्या होगा, cos square x is equal to what, half into 1 plus cos 2x. Okay, so we can write half into integration 1 plus cos 2x. So likewise you have to solve this. अगर सेम वे आप करें तो क्या होगा, x/2 प्लस हाफ तो है इंटू cos 2x का इंटीग्रल क्या है, sin 2x/2 हो जाएगी. ठीक है, प्लस से. सो दिस इज द आंसर. सो सपोज यू आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सपोज tan square x. You do not know the integral of tan square x, but you know that tan square x is equal to what, from trigonometry it is what, sec square x minus 1. Okay, and from here you can write integration sec square x dx minus 1 into dx, integration dx, और you can write integration sec square x. तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, किसको डेरिवेटिव करने से sec स्क्वायर मिलता है, ddx ऑफ tan x इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x. सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, tan x. सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, tan x minus integration dx is equal to what, x plus c. So this is the final answer. So in this way you can apply the integral, standard integral, you can convert into standard integral and can solve the problem. Okay. So there are in the first few exercise 1 and 2, 3 exercises are there. I am not going to solve much problem. One problem I am going to solve and finish this particular 2 exercise. You are going to solve all these particular questions. Okay, I am going to use this method of integration. How to use the method to solve the integral. So one question is interesting.
very interesting questions, and I'm going to solve this question now and then finish the chapter. Other problem you try to solve. First exercise 7.1 and exercise, that is this exercise 7.1 you are going to solve, and remaining I'll try. Okay, question is that if ddx of fx equal to what, 4x cubed minus 3 by x to the power 4, such that f2 equal to 0, then find fx. You have to find the function. Clear? Given that ddx of fx is equal to what? This. You have to show that this is given with the functional value at 2 equal to what, 0. You have to find fx. Okay, remember one thing. Suppose you know that ddx of, suppose x square is equal to what? 2x. So from here what you can write? Integration 2x dx is equal to what? x square. लिख सकते हो कि नहीं? So this is ddx of fx equal to this. Start with the given condition. Given ddx of fx equal to what? 4x cube by minus 3 upon x to the power 4. 3 upon x to the power 4. This is given. Derivative of this function is equal to this. तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगी? fx हो जाएगी. Therefore fx is equal to integration of 4x cube minus 3 by x to the power 4 dx. Okay, now there are two algebraic functions, so these two algebraic function can be separated. One can be 4 out होगा, x cube dx minus 3 out होगा, and it will be 1 by x to the power 4. 1 by x to the power 4 is equal to what? X to the power minus 4 dx. So now you can apply x to the power n formula. What is the formula? X to the power 3 plus 1 means that x to the power 4 by 4 minus, what will happen? X to the power what? Minus 4 plus 1 means minus 3 divided by minus 3. Okay, plus c. When integral is finished, you have to add by constant. So ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा. फाइनली क्या हो रहा है? x to the power 4 माइनस से प्लस होगा, प्लस x to the power minus 3 plus c. This is your fx. Now what is c? c is an arbitrary constant. So you have to find out the value of c also. Again, given what is the given condition? Given condition is what? f2 is given. The value of f2 is given. Also f2 equal to what? 0. Your function is what? This is your function ultimately. fx equal to this. Now if you put the value of 2 here, f2 will be everywhere, whatever with the x, सब जगह में क्या होगा? ये क्या हो जाएगी? Therefore this is suppose relation number 1. Okay, so f2 equal to what? 2 to the power 4, 16, and this is 2 to the power minus 3 means 1 by 2 cube means 1 by 8, and plus c equal to 0. And finally if you take LCM, c equal to, उधर जाएगी तो LCM लेने से क्या होगा? 129. Okay, so c equal to minus 129 by 8. Now putting the value of c here, putting the value of c in equation 1, what will be the result? What is your original ultimate function? fx equal to what? X to the power 4 plus x to the power minus 3 plus c. Minus c का value minus 129 by 8. Okay, this is your function. So how to solve this equation? First you have to start from here. Derivative of function is given. So तो इंटीग्रल, हमें इंटीग्रल लेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा? fx होगा.
So fx is equal to integral of this, and now you have to perform integration by using the standard integral, and you get this particular relation. And here c is an unknown quantity which is an arbitrary constant. So since the f2 equal to 0, so using this, when x equal to 2 you put, it will be 16, it will be minus 1 by 8, and ultimately you get c, and putting the value of c in this equation you get finally fx. Okay, hope that there are few simple problems are there in the particular chapter, that is 7.1. so you go through these questions to develop your the basic idea how to apply the standard integral. And in the next class I will directly start the method of integration. And the method of integration is that in total whole this is an indefinite integral is divided into three methods. One method is called substitution method, another is called method of partial fraction, and another is called one method by parts, integration by parts. So we can use these three methods to complete the total indefinite integral. So I hope the basic problems I have discussed you understand, and in the next class more problems we will discuss and give more detailed formula also. There are another two types of formula is still there. We will discuss all these formulas and how to apply these formulas in the questions we will discuss. Thank you very much.